joint entrance test. We have with us today faculty members from FTii. Right now, there's Professor Vikram Verma from Art Direction and Production Design. And there is Ms. Professor Ganga Mukhi, who is from Film Direction Department. Both are institute's ex-students, alumni. Myself, Milind Damle. I am also ex-student of the institute. And we may have the faculty members from SRFTI joining in. Yeah. So I am presenting before you a quick glance at the JET that we are going to conduct. I hope you all can see this. Yeah. So this JET 2021 is going to be a multi-stage selection process. I hope you all are aware about the courses that we have for which this JET is being organized. If you wish, I'll just take you through these courses also. So these are the courses that we have at FTI and SRFTI. They are for 3 years duration. Direction, screenplay writing, cinematography, editing, sound recording, and sound designing. Then there are the courses which are only at FTI are this ADPD, Art Direction, Production Design, Screenwriting, and Screen Acting. 3 years, 2 years, and 2 years. Then these are the 2 courses that we only have at SRFTI, that is Producing for Film and Television and Animation Cinema. Both are 3-year courses. Then a very important slide here, at FTI we have 1-year program, and at SRFTI we have 2-year program. That is called Electronic and Digital Media. And we have direction, here we have direction and production for EDM, electronic cinematography, cinematography for EDM, video editing, editing for EDM, sound recording and television engineering, and sound for EDM. And the courses which are only at SRFTI are Electronic and Digital Media Management, Writing for Electronic and Digital Media, and these are 2 years programs. Let us come to the academic admission procedure now. Okay, for all courses in FTI and SRFTI except for screen acting, there is a stage 1, which is the JET 2021, for which we have a common test for both the institutes. And the dates which we have finalized are 18th and 19th December 2021. On which date which papers are going to be, that I'll show you later. Then at the second stage, we have the orientation and interview. That is going to be only for the shortlisted candidates, and we may have it approximately in the month of April 2022. And then final selection for all courses in film, television, and EDM will be on the basis of the performance of the written exam, orientation, and interview. Okay, for screen acting, there is one more stage. So rest all other programs, courses have 2 stages. Here we have 3 stages. After the JET, there is going to be an audition round, which is the stage 2 for acting. And then at stage 3, we have orientation and interview. Again, audition is also for shortlisted candidates, and orientation and interview will also be for the shortlisted candidates. The dates are given here, the same as it is. Final selection will be on, again, written examination, audition, orientation, and interview. That remains the same with adding the audition. Now, these are the 27 proposed cities where we wish to have our written examination. It is there available on the JET portal that you must have seen. The JET portal is available on both the websites. You may go to FTI or SRFTI website, which will lead you to the JET website portal. Now let us have a look at the minimum education qualification. Now for that you have to follow the JET portal only. Do not follow anything else than that. For FTI and SRFTI, if you could see, direction, screenplay writing, cinematography, editing, sound, screen acting, screenwriting, producing, bachelor's degree in any discipline. Bachelor's degree in any discipline, that is
absolutely clear written here. Okay. Then for art direction and production design, bachelor's degree in applied arts, architecture, painting, sculpture, interior design, or related fields in fine arts or equivalent to the bachelor's degree. That is also an important point. And animation in cinema, bachelor's degree in any discipline, proficiency in drawing is what is required. And PG courses in television and EDM, this is how it looks like. Bachelor's degree in any discipline. This is what the minimum required qualification is. I would like to request you all that before you make any decision, which is what is written here to appear for JET 21, please visit the website of the concerned institute and the specific courses, and be 100% sure also about the updated information of each course, eligibility criteria, the admission procedure. It is all written there. So please follow that again in detail. Make sure the course that you want to apply is the only course where you are actually applying. Once you have applied for a particular course, then nothing can be done to change it. All the information is available at applyjet2021.in, FTI's website, and SRFTI's website. Now, for the better understanding and also your possibility to appear for the JET, we have grouped the courses in A, B, and C. So there is Group A, Group B, and Group C, and you have an option to apply for one course in each group. So any of you, if you wish to apply 1, 2, or maximum 3 courses, then you may apply after paying the appropriate fees for the same. And this exam is going to be in the offline mode. I'll again say the same thing. You may apply for Group A 1 course, Group B 1 course, Group C 1 course. If you wish to apply 2 courses in Group A, that won't be possible because Group A examination, the JET, is going to be at the same time. You will be given a specified time. I'm coming to that now. If you could see the Group A courses that we are offering: producing for film and television, animation, cinema, art direction, production design, screenwriting, film, TV, web series, screen acting, and electronic and digital media management. In front of each course, we have written the place where this course is conducted, either FTii or SRFTI. And the date for the Group A examination is 18th December 2021 from 2 p.m. to 5 p.m. So if you wish to apply for any of these courses, then that exam will be on 18th December. Okay. Then we have Group B. Now you may notice that all the 4 courses mentioned here are at both the places, FTii as well as SRFTI. So when you apply for any of the course, you are eligible to get selected or rejected at both the places, or you may get selected at one place or the other. So that applying for Group B allows you for appearing JET for both the institutes, FTI as well as SRFTI. This exam is going to be on 19th December from 9 a.m. to 12 noon. Then we have Group C. Again, you see we have courses here which are both at SRFTI and FTI, which is a direction and producing, cinematography and electronic cinematography, editing, video editing, sound recording and television engineering, and writing for electronic and digital media, which is a standalone course in SRFTI. So this goes in Group C, and this exam is going to be on 19th of December from 2 p.m. to 5 p.m. Now I have shown you Group A, Group B, and Group C. So these are the 3 groups. Yeah. Now you may apply according to the fees that is
being shown on the screen. These numbers are available on the website also. If you have to apply for one course, then the fees is this 2,600 for SC, ST and PWD. Two courses, if you have to apply in one course in A and B, B or C, B and C, A and C, then for open, general OBC and general EWS, 3,900, and three courses, that is one course from each group, then the fee is 4,000 and rupees 1,200. Now the scheme of JET 2021 written paper. Please look at it very carefully. Each question paper will consist of maximum 100 marks. And the 100 marks are further divided as below. There is going to be paper 1 and paper 2. In paper 1, there is going to be a multiple choice questions, which is MCQ. One right answer, 1 mark each, 20 questions, 20 marks. That is part A of paper 1. Then part B of paper 1, which is multiple select questions, that is MSQs. And that is going to be for specific subject that you are going to apply. For acting, there would be specific questions pertaining regarding acting only. Which are focused on the course of acting. Direction, then it's going to be a subject specific questions of 30 marks. There will be 15 questions and each question will have 2 marks. So part A is 20 questions, 1 mark each. Part B is 15 questions, 2 marks each. The answers for MCQ and MSQ will have to be marked on OMR sheets provided to you on the center. Yeah. Then there is going to be a paper 2, which would be descriptive type questions, and it would be again according to your subject of specialization. That is for 50 marks. So in total, this makes a JET written test for 100 marks. Now there is going to be a negative marking. Please pay attention to this. 20 questions, 20 marks. One right answer is 1 mark plus, but each wrong answer will be having minus 0.25 marks. Each wrong answer, a deduction of minus 0.25 marks will be there. This is paper 1, part A, common to all specializations, MCQ. So the common to all specialization will be, if you could see, we have art and craft of film and TV, then allied arts, literature, general awareness, environmental awareness, general knowledge related to art, culture, media, etc. This is what we mean by common to all specializations and general knowledge. Then we have subject specific questions, which is part B of paper 1, where we have 15 questions, 2 marks each. Each question will have 4 answers, 1 or more than 1. Of all these 4 options will be correct options. Yeah. So there is option and options. So please read it carefully. It is available there. Visit it once again after this seminar is over, before you apply. Read it carefully so that you understand it well. For each question, candidate will choose the option or options corresponding to the correct answer or answers. So there is a possibility of all 4 right answers. So if you have all 4 ticked, then only you get the full marks. Once you give any wrong answer, you will have minus marking. If you leave the question unanswered, then there will be a 0.
So for one right, there is a full mark. For two rights, there is a two rights, two wrongs. So if you take on any wrong answer, the minus mark will be awarded. So this is how it goes. Plus 0.5, plus 1, plus 1.5 and 2. Then the paper 2, have I covered everything? Yeah, negative marks is also written here, minus 0.25. Then the paper 2, again respective specialization, the area, the course that you will be applying for. This section is designed to test the ability and aptitude of a candidate in the specific field of cinematic expression. The long descriptive question will be compulsory question, one question for 20 marks, and that is compulsory. And then there will be descriptive questions, maximum 3 out of maximum 6 questions to be answered. 30 marks. There is a possibility that you may have sub questions in the product question, like for example short notes. Okay, so there could be option in that. So thus we have paper 1 and paper 2 together of 100 marks. Okay. So the paper 1, which is of MCQ and MSQs of all the eligible appeared candidates, will be evaluated. Further, based on the evaluation paper 1, only selected numbers of the top scoring candidates based on the respective category, as we have general, OBC, SC, ST, general EWS, PWD, etc. So according to that will be further evaluated for paper 2 using the ratio against each seat that is available on the course for this thing. So how the ratio works? For all the courses except FTi screen acting, you may see it is 1:15 for general, OBC, NCL, general, EWS. So for each seat, the top 15 answer sheets will be checked. For each seat, top 25 answer sheets will be checked for, say, SC, ST, general, PWD, OBC, NCL, PWD, general, EWS, PWD, etc. I'll give you an example, but just go to point number 2. We have here, say, for acting, the ratio is higher. So it is 1:45. So for the general, OBC, NCL, general, EWS, we have 1:45 ratio. So for each seat that is in general category, unreserved category, we will check 45 answer sheets. The top 45 answer sheets for the paper 2, evaluation of paper 2. For example, let us see this as an example. So here, if you could see direction and screenplay writing, the total number of seats is 11. Out of that, 5 is general, OBC, NCL is 3, SC 1, ST 1, and general EWS is 1. So this all together makes it 11. Now, how do we go with the evaluation of paper 1 for the paper 2 evaluation? Now see, yeah, here it is. So just see this as an example. We have 11 seats in direction and screenplay writing. So for general, 1:15 is the ratio. So we have 5 seats in general category. So 5 into 15, so 75 papers will be checked, which is paper 2. So basis the performance of paper 1, the top 75 papers of paper 2 will be checked. This is how the ratio works here. It is all written on the portal. Just go and have further clarification.
Based on the evaluation of paper 1 and paper 2, the merit list of JET 2021 will be prepared. And after this JET 2021, we will have a selection process, which is a second stage of after the JET 2021. So JET 21 finishes here at this particular point when we have the merit list of JET 21. After that, we move ahead to the orientation and interview. So before going to that point, let us have questions. If you have any questions for the points that we have presented up till now. Yes, you may raise hand or you may ask the question. Yes, Vivek, go ahead. I would Vivek, just a minute. If you have any questions with regard to the graduation, you have applied for the graduation, how would you attend? Will you be allowed to? सर मेरा क्वेश्चन एक मिनट उन चीजों से एक मिनट विवेक, तो मैं इसके सारे जवाब बाद में देने वाला हूँ इन द रेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन. ये ग्रेजुएशन आप कैसे अपीयर क्या कर सकते हो, सो यू मे आस्क द क्वेश्चंस नाउ. सर मेरा क्वेश्चन था, एक जगह मैंने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा कि एमसीक्यू के लिए 90 मिनट्स दिए जाएंगे और 90 मिनट्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए. सो माय क्वेश्चन वाज कि क्या ये दोनों पेपर्स सेपरेटली अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होंगे 90 मिनट के अंतराल पे, या अगर कोई लड़का अगर 50 एमसीक्यूज अगर 30 या 40 मिनट में सॉल्व कर ले रहा है तो उसके बाद अगर वो पेपर हैंड ओवर कर दे वहाँ जो भी परीक्षक हैं, तो क्या उसे डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए 40 से 50 मिनट बाद मिल जाएगा? नहीं, जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे तो यू विल गेट द बोथ द पेपर्स साइमल्टेनियसली. सो एमसीक्यू एंड एमएसक्यू, ठीक है, वो दोनों 3 घंटे के लिए आपके साथ ही रहेंगे और क्वेश्चन पेपर एक ही होगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Am I clear? नो सर. हाँ, वो दोनों पेपर एक ही पेपर होगा, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 साथ में ही होगा बस. ओके सर, ओके. यानी मैं डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू वगैरह एक साथ सॉल्व कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं. हाँ, थैंक यू सर. बस यही कंफ्यूजन था. थैंक यू वेरी मच. एक क्वेश्चन. हेलो सर. Just a minute, Deepak, just a minute. As I have already said that we have created 3 different groups and you can apply only one course in one group. Group A, Group B and Group C, only you can apply one course in one group. You cannot apply 2 courses in one group. You will not be able to give exam for 2 courses in one group. As I have already shown that we have exam on 18th and 19th. Hello. Please have a look at it before you apply. Yes. Sir. Deepak Kumar. हाँ, thank you sir. Sir, I was asking कि where we have to get 35 in first paper 1. Is it good? Is it true? 35 कंपल्सरी लाने ऐसा सुना था मैंने. कहाँ से सुना था? ये कोई दोस्त ने बताया मेरे को. नहीं, जो हम यहाँ पे सर जो अपने सर ने यहाँ पे जो बताया वही आपको फॉलो करना है. राइटिंग क्वेश्चंस या जो भी जेट पोर्टल में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वही आप फॉलो कीजिए. ओके सर. Acha, we do not this thing promote any specific like courses, crash courses, short courses, which may claim to be the preparation courses for JET 2021. FTI do not endorse or support or any such thing. Please believe in your gut feeling while you appear for the course. You are all passionate for joining the film or television or the media and the courses that we are offering. So believe in yourself and prepare accordingly. We all know that you are coming here to learn. We do not expect you to be extraordinary, like already knowing all and everything of the specialization. So believe in what you know and how much you know. Read the answers, read the questions well and write as you feel right. Yeah. Now, if you are applying for 2021 JET,
how could you expect that we will give you admission for JET 2023? Is it possible by any chance anywhere? Yeah. So that is not possible. Then there was one question for reading of materials. As I have said, it's about the art, literature, music, theater, the films that you watch, the web series that you watch, the television that you watch, the things that you read, the things that you hear, listen to music and things like that. तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक गिवन डिटेल्ड सिलेबस नहीं है. जो चीजें आप देखते हो, जो चीजें ट्रेडिशनल कल्चर का पार्ट है, वही उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एंड जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वो उसी सब्जेक्ट एरिया से रिलेटेड होंगे. Knowing that you may be aware of the basics, we don't expect you to know very high standards of what is going to be taught here. Then what is it? Please do not switch the language while answering the descriptive questions. Please write in only one language. You may be allowed to write in either English or in Hindi. If you choose to write in either of these languages, either Hindi or English, please write in one language only. Also, अगर आपको हिंदी में जवाब लिखने हैं तो पूरे जवाब हिंदी में ही लिखे. उसके लिए इंग्लिश की लिपि, रोमन लिपि का उपयोग न करें. अजय वर्ड लिखने में AJAY न लिखे, अजय ऐसा लिखे. आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं. अगर हिंदी में आपको लिखना है बिल्कुल आप लिख सकते हो, मगर रीजनल लैंग्वेजेस में मत लिखना. आपको क्वेश्चंस लिखने की अनुमति है इधर इंग्लिश में और हिंदी में. Can a person add a course after filling the form for 2 courses from group A2 and B? Can he add other course after filling? Sorry, shutter love मतलब ये कैमरामैन हो गई पक्के. My shutter love. Sorry, आप एक बार उसका एक डेडलाइन है, आप उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं होगा. इसलिए कोई भी फॉर्म भरने से पहले 10 बार उसको अच्छे से पढ़ें. Or you make sure that the course that you want to apply for, once you have applied it, once you have paid the fees for the application fees for the particular program, no change will be entertained. There is no addition later. Whatever you have to do, you have to choose it once. उन्हीं क्या क्या पार्ट वन क्वेश्चन. सागर पाटनकर म्यूट करा प्लीज. MCQ MSQ में जो 45 पास होंगे उन्हीं पार्ट 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव लिखा दिया. नहीं, आपको पेपर दोनों लिखने. You have to write both the papers, paper 1 and paper 2. This is not while you are writing, this is while we are checking. Provide guideline PDF on website. Everything is written on website. Everything is given on website. The areas in which you will have to be preparing, it is also there, written there. Is it mandatory that to apply for animation cinema, the candidate has to be from the fine art field, or do she has to be perfecting drawing, sketching, animation? It is said that the preference is given for drawing. It is the it's not a mandate, it's the requirement, maybe, if we may say so. So for an animator, the drawing is something which is a part of it. So having that understanding and skill is something that is preferred. What should be the minimum score to clear JET 21? Minimum score. There's no minimum score. There is no minimum score. We are looking at the higher level.
Then how many plays we have to do prior to join FTI? No, you may not have done any play. There is no mandate for you to make or have acted or produced or directed or written any play for this. There is no mandatory requirement of doing any particular play or anything like that. Hello, sir, can I ask something? Just a minute, Sachin. I'll be graduating in the month of April 2022. Can I apply for JET 21? Understood? Yes. Yes, Simon, you may be able to apply. Descriptive questions. Yes, Divya, would you like to ask question? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि आपको 10 सीन की स्क्रिप्ट लिखनी है, तो मतलब ये लास्ट जेईटी में आया था, तो मतलब जो एग्जाम हमारा जो कॉपी चेक करेंगे वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब वो प्रॉपर स्क्रिप्ट वाले फॉर्मेट में आंसर होना चाहिए या फिर वो मतलब एक पैराग्राफ टाइप में भी होगा, या मतलब कैसा होगा? उसका फॉर्मेट बता दीजिए डिस्क्रिप्टिव आंसर का। डिस्क्रिप्टिव आंसर का कोई फॉर्मेट नहीं है जो कि स्टैंडर्ड है। आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको जो लगेगा वैसे आपको लिखना है। मतलब मैंने पहले कहा था कि आपको, अगर आपको ये पता है कि स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है तो फिर आप एफटीआई क्यों आएंगे? ओके सर, है ना? आप वैसा लिखिए जैसा आपको आता है। ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आपकी इमेजिनेशन क्या है, आप किस तरह से एक चीज एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको जो क्वेश्चन लिखा है क्या आप उसको समझ रहे हो, क्योंकि वो भी एक तरह का ब्रीफ है आपको दिया हुआ। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको जवाब लिखना है। और अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा पॉइंट ए बी सी कि आप ए में इस तरह लिखिए, बी में इस तरह लिखिए, सी में इस तरह लिखिए, देन यू जस्ट फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस। ओके सर। है ना? कि आपको एक कथा लिखनी है तो आप वैसा लिखिए, है ना, इस तरह से। तो जस्ट फॉलो द क्वेश्चंस प्रॉपरली and write what you feel right, what is being asked you according to your understanding. Okay sir, thank you sir. When you say one person will be selected from 15, no, I did not say one person will be selected from 15 papers. You have understood it wrong. It is not one person from 15 papers. It is 5.75. 75 papers, say for the 5 seats. That is how it is. Have you got the answer, Shankaran? This is Shankaran sir. So no, can you please explain the logic behind when you said 1:15 or general category? No, it is not one person getting selected from 15 papers. As we have it for the orientation, there is a ratio that is applied here. Shankaran, it is the ratio and not the numbers that we are talking about. It is the ratio which is 1:15. So there will be top 75 papers which will be evaluated. Out of those 75 top papers, 5 candidates will be shortlisted based on the performance in part 2. Does that answer your question now? Yes sir. Thank you so much. Right, sure. Thank you, Varmaji. Isn't the mode of communication in English for the courses? Yes, the language of instructions is English for the courses at both FTI and SRFTI. Paper 1, paper 2 दोनों चेक होंगे क्या? जो टॉप स्कोरर है पेपर 1 का बस उन्हीं का जी, जो टॉप स्कोरर्स है अकॉर्डिंग टू द रेशियो उन्हीं का पेपर 2 चेक होगा। Okay, I'll again elaborate it a bit. It is according to the ratio that we have shown to you according to the category. So there is a ratio that will be applied for each seat. There will be a certain number of top papers of top scorers of paper A. Only those will be checked at the stage 2, that is paper 2. I am in my final year of college, haven't given my final year exam yet. Can I apply with a provisional mark sheet?
No. Yes. Final year of college, well, no? So this question regarding the appearing graduates. So those candidates who are appearing for their last year or maybe second last semester, those candidates also can apply. Okay, they don't have to they don't have to upload their final certificate, but they can upload their latest mark sheet. So suppose somebody is in fifth semester or fourth semester, they can upload that fourth semester's mark sheet. Okay, and you can clear the JET. And also further, if you are in that top 75 or that ratio, you can also eligible to present for the orientation and interview. Okay, without submitting your final graduation certificate. You also can be get selected without your final mark sheet provided. But before beginning of the course, you have to submit your final mark sheet and certificate. So you have appearing graduates, they have time till October 2022. Your exam may be, final year exam may be on May to June, and maybe you have still 3 months in your hand to get your mark sheet or get your results out. So anybody are expecting their final exam will be on May, June, maybe April, May 2022, those candidates can apply for JET examinations. Also take this. This is for all the candidates who are appearing for their last year examination. Okay. When will the batch be starting? Yeah, batch for JET 22 examination, that batch 22 will start most probably post August, maybe September 2022 or October. But that will be announced later on, because we don't know the current situation or maybe situation in next 2-3 months. But it will for JET examination to get this process clear, it will take at least 3 to 4 months. So you can expect next batch will start post August 2022. Somebody is asking in Hindi, can spelling or grammatical mistake will be negative? No. Negative mark has negative sign or marking. No, there is nothing like that. You may express yourself. There is no negative marking for grammatical errors. Listed if talents with good potential are found in screen acting course. No, we have 11 seats. So 11 seats will be according to the norms that we have. More than 11 candidates will not be chosen. Then there was a question. Yeah, you may refer previous question papers which are there on the website. सुजीत जी, आपको हमने बताया कि जो भी उसका एरिया है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा या जनरल क्वेश्चंस होंगे, वो सारे हमने वहाँ पे लिखे हुए हैं. आप जाके वहाँ विजिट कीजिए. 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, तो ऑफ कोर्स सिनेमा से है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो होंगे ही, और स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड होंगे. जो 20 और 30 का गणित मैंने आपको बताया है, तो सब्जेक्ट एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास होंगे जो कि 30 मार्क के होंगे. 11 कैंडिडेट्स हिंदी हो गया. Subhaji is asking, no, ऐसा कुछ नहीं है. Good command on English. See, it is what you want to say. You have to be able to answer that. You have to be able to write that. So we are not here to check the level of English that you would express. It is how you are. That's why I'm again saying, it is about how you put forward your things. The question, how do you answer that question? How do you imagine things? How creative you are while writing? So very articulative language is not something that we are looking at. How do you express yourself is what primarily we see. तो आप भले ही हिंदी में लिखो और इंग्लिश में लिखो, जो भी लिखो, मगर आपका जो दिल करे वैसे उसको लिखना. जरूरी नहीं कि आपकी भाषा पे बहुत अच्छी कमांड हो लिखने में. आई एम सेइंग इंग्लिश में, फॉर एग्जांपल.
बट वो जैसे सर ने बताया, बट उस पर एक ही आप ध्यान रखिए कि आप अगर हिंदी लैंग्वेज चूज कर रहे हैं तो राइट ऑल दी आंसर्स इन हिंदी, चूज एनी वन लैंग्वेज एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द पेपर, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो एक क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा, दूसरा हिंदी में लिखा, सो डोंट डू दैट. 30 मार्क्स का जो MSQ है, MCQ नहीं है वो, 30 मार्क्स का जो MSQ है वो सब्जेक्ट एरिया स्पेसिफिक होगा. So if you are applying for direction, the questions of 30 marks will be in that direction only. If you are applying for cinematography, it will be towards that. तो उसमें आपको एडिटिंग वाला सवाल नहीं आएगा. अगर एसोसिएटेड है तो आ सकता है, मगर वो बहुत बेसिक लेवल का होगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. Provided COVID situation is in hand, next session will be completely offline or hybrid. The next session would be hybrid. We may have a few classes online, but it's a practical oriented course. So the practical has to be done on campus, and we are hoping to have the selected candidates on campus as the time permits. But yes, there is a possibility of hybrid course. We may begin with the online program. We may cover a certain portion online, and then we may invite you to campus. Further process of admission will online or offline. Yeah. Further process of admission. So the admission after the JET part is over, the further process of admission will be online. So the next part, which is orientation and interview, will be online. For the screen acting, the auditions as of now is online, but if there is any change, the selected candidates will be informed accordingly. For written examination, the final merit list is prepared on basis on paper 2 or aggregate of both paper 1 and paper 2. So for final merit list, there is a weightage for separate weightage for acting course and other courses that will come later. Should I present? Damleji sir will present the slide once we finish the JET queries. So anyone has any queries about any kind of caste certificate, EW certificates, those questions we can take next 10 minutes. So anyone if has any question regarding the caste certificate, we'll just go ahead with these questions. Hello sir, sorry to interrupt. Sir, it was my question that was recently taken up. So I wanted to ask that for the written examination, you have already selected few candidates to check their paper 2. So sir, their merit list will be prepared on basis of paper 2 or both paper 1 and 2? Both paper 1 and 2. Okay sir, thank you. Yeah, there is a question. Hello, sir. Yes. Yeah, one at a time, please. I think there is a question here. I received my OBC NCL certificate dated today. Can I apply using that certificate? Yes. Yeah, okay. Ketan, you So have... for SC, Ketan, go ahead. yes, sir. For SC candidate from Maharashtra, is caste validity certificate required, or just the caste certificate is okay? For which category? SC. Yeah, caste certificate is okay. Is there any scholarship for the same SC? There are a lot of scholarship provided by state government. So regarding scholarship, you can visit FTI website. It is mentioned there. Okay. Yes, Not sir, for- but for the not for- scholarship validity certificate is required, or it's also okay? No, the scholarship is not for the JET examination. Scholarships, once you get selected on the campus, then you can eligible for any scholarship. Okay. Okay. Yeah, no, yeah. Okay. Once you are student, FTI students, then the further process will be communicated to you. Yeah, thank you. Hello, sir. Yes. Sir,
मेरा सवाल ये था कि सर अगर कोई एससी कैंडिडेट उसका कट ऑफ अगर जनरल कट ऑफ से ज्यादा हो तो वो जनरल के सीट में एडमिशन होगा या उसका एडमिशन एससी कैटेगरी में होगा? Cutoff means you are saying the Sir, I'm marks. saying that yes, sir, I'm saying that So what I understood is if you get more marks or similar marks to general candidate, yes, sir, isn't it? yes, sir. Yeah. Yes, So sir. you can come into general category on the basis of marks. Okay. Okay, sir. Hello. Yeah, but Okay, once you are in general category, then you may not be able to avail other facilities regarding to your caste. Isn't it? So sir, it's Hello, sir. it's in the hand of the candidate कि वो क्या choose करता है. One second. Sorry. Yes, Subhash. सर मैं पूछ रहा था कि सर वो फिर कैंडिडेट के हाथ में है वो कौन सा सीट किस वे में जाना चाहता है ना सर? एससी के थ्रू या जनरल के थ्रू? अगर वो जनरल का कट ऑफ अगर पार कर देता है तो नहीं, अगर यू जनरल का कट ऑफ आप पार करते हैं तो विल बी ऑटोमेटिकली विल बी इन दैट जनरल कैटेगरी, राइट? अगर वो जनरल कैटेगरी में सीट लेगा तो उसको एससी का जो फैसिलिटी है वो नहीं मिलेगा. सर लाइक स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा. हाँ सर, लाइक स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा सर. No, for that I will get back towards end of the session and I'll just confirm and get back to you before answering anything. Okay, so your name is Subha, right? Subha Vishwas. Yes sir, yes sir, sure Yeah. sir. So yeah, okay. I'll take your. Yes, Faisal. Go ahead. मेरा हेलो सर, मैं लखनऊ से हूँ. मेरे दो सवाल Yes. हैं. पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जैसे मैंने लास्ट पेपर्स पढ़े हैं उसमें कहीं पर भी अब फिल्मों के क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं, पर अब जैसे वेब सीरीज बूम हुआ है इंडिया के अंदर, तो इस बार वेब सीरीज के रिलेटेड भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. Yes, chances है because we are into media and one OTT platforms or those all is not different than the films, I guess we can say. So as a content wise question आ सकते हैं. ओके, थैंक यू सर. मेरा सेकंड क्वेश्चन ये 2017 There is no dress एग्जाम code. में Yes, go ahead. Venkat, could you please mute your mic? सर मेरा सेकंड क्वेश्चन Venkat, could है you? 2017 एग्जाम में मैथ्स आया था, तो सर इस बार भी मतलब और पिछले 2-3 साल से मैथ्स नहीं आया है, तो इस बार मैथ्स भी आ सकता है सर? नहीं, जो मिलिंद सर ने आपको जो दिखाया एरिया जो एमसीक्यू के लिए उसी में से आएंगे, उसमें मैथ्स अगर दिखा नहीं तो उसमें से नहीं आएंगे. सो दैट डॉक्यूमेंट जो एमसीक्यू के लिए जो है वो कैन फाइंड इट ऑन जेट पोर्टल और एफटीआई वेबसाइट ऑल्सो. जो डाउनलोड जेट बुलेटिन और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस, वहाँ पे पूरे अपने एमसीक्यू के लिए क्या क्या एरिया से क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर दिया हुआ है, और जो मिलिंद जी ने अभी सर ने अभी दिखाया यहाँ पे. सो वी कैन शो इट वंस मोर टाइम, वी वांट टू शो maybe next time. Yeah. No, it will be related to the areas, allied arts. So that will be there. I could see someone, Piyush Thank you Mishra. so much. Piyush Mishra, are you here? Excuse me, sir. Shri, just a minute. Shri, just a minute. Yeah, sure, sir. Okay. Someone has asked the question with regard to the dress code or beard, but I don't get. Could you come out, ask the question again, please? What is it? Disciplinary instructions regarding for what? Appearing for the JET? Is it? No, I don't think there is any dress code as such to appear for the JET. Okay, there is a question here. If there is a situation that OBC non-creamy layer, just a minute, OBC non-creamy layer certificate is taking time to get from respective government officials, can we upload the certificate later or can we submit it at the time of admission?
Sir will answer that. Shri, go ahead, ask your question. Yes, sir. Thank you. So I wanted to ask, what does it mean when a candidate's name is listed in the waiting list? Like, what does it mean? Is there any such thing like a waiting list in FTI selection process? Yes, there is a waiting list. That waiting list means in that particular category, the candidate is on the waiting because the JET is conducted for both FTI and SRFTI. So though the orientation and interview process is different after the JET, that is the first stage, but there is a possibility of you having or getting selected in either of the institute. So in that case, you may be kept on waiting for the other. Then it depending on the situation, you may decide which institute you wish to take. That is also a possibility. But there is a waiting list. Is. Okay, that's all I wanted to know, sir. Thank you. Hello, sir. Yes, Saurav. सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ FTi में सर्टिफिकेट कंसीडर होता है क्या? सुना नहीं दिया ठीक से, फिर से पूछो। सौरभ, सवाल ठीक से सुनने को नहीं आ रहा है। Is it audible? आवाज आ रही है अभी? नहीं आ रही है। हेलो हेलो, सुनाई नहीं दे रहा। सर अभी आ रही है आवाज? अभी आई, बोलो। EWS सर्टिफिकेट कंसीडर होता है FTI में? EW वो सर जवाब देंगे उसका। हाँ सर। Yes. Two, three questions. First of all, ST certificate regarding a question पूछा था, can someone repeat that question regarding ST certificate? Sir, EWS certificate, economical weaker. No, before Saurabh, someone talked about ST. Okay. Sir, I asked that question. Sir, ये ST के लिए नहीं था. सर ये क्वेश्चन ये था कि कोई भी अगर रिजर्व कैटेगरी से अगर वो जनरल कैटेगरी का कटअप से ज्यादा उसको मिलेगा तो सर बोल रहे हैं कि उनका got it. So it is like this. There are one is for reservation, one is for financial benefits. I think you got confused between the two. So now what we are saying is that for admission there are reservation on the basis of what Mr. Milind was showing you. If a student who is underserved, if a candidate who is from underserved category scores a better mark than a general candidate who is being selected, then the candidate, for example, I am an ST candidate, my mark is better than the last general candidate who is being selected. So that means my candidature will be considered as a candidature on general unreserved seats, and the seat which is reserved for ST, the category which I belong, will be given for another candidate. Now the second part of your question, does that mean the ST candidate who is considered as general during admission will miss some financial benefit? No. The scholarship part, financial part is definitely a separate part. I hope that makes your question clear. Now, yes, sir. Coming back to Saurabh. Saurabh was asking about general EWS certificate. We need that certificate in the format which is uploaded on the JET portal. Another question was about OBC and CL if that is not available in chat. We are expecting OBC certificate within the date specified in the JET portal. So if you are not able to get it, you can intimate JET Organizing Institute, the email ID given it, but we may not be able to consider it because date is quite important for considering any candidate who is belong to NCL. Thank you. Yes, sir, you were saying something. I'm Piyush Mishra. Yes, sir. Yes, I could see some of you are dancing in front of the camera. You have anything to ask? Oh, no, sir. Sorry, sir. Actually, I No, thought I mean, is it some kind of a show that is happening here? No, sir. Sorry, sir. Hello, sir. Hello. Sachin, yes, Sachin. Please. Sir, can you please elaborate about I will do that. Okay, sure. While wrapping it up, we'll again go back to that. Yeah, Sure. there is a negative marking, and I'll explain it once again.
Sure, sir. There are scholarships, and once a student is admitted, the academic department will guide you on how to apply for the particular scholarship from the state, and as well as for the SC/ST candidates also. So that is a second stage after you are admitted. There is no limit to attempts for this exam. As of now, up till JET 2021, there is no such thing that you may apply to the JET for 5 times or something like that, or whatever. So how? But I wish that you get it cleared in the first attempt only. So I wish you all the best of your attempt. Can we answer in Hindi with using some words of English? If you have to write mobile, then you may write mobile in English. जिगर, आपको कुछ पूछना है क्या? Yes. तो पहले 4 से 6 में आपका समाधान सर नहीं एक हुआ? क्वेश्चन है, MSQ आपने बोला कि ये सब्जेक्टिंग के लिए वो सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। ओरिएंटेड होगा या फिर मतलब फिर से पूछो, सुनाई नहीं दिया ठीक से। हेलो creating MU technical oriented or Sir, I'm sorry, I'm not able to hear you well. You may just write your question in the chat box, please. Thank you. Sir, I have a question. Can you hear me? Yes, please. Sumit, yes, go ahead. Yes. Sir, I'm a 2018 pass out, but I haven't received my degree certificate yet. There's some issue from the university and I tried contacting university, but I haven't got any response. So will I be eligible for admission if I get selected with my provisionals? Oh, are you a graduate? Yes, I'm a graduate. 2018? Yeah. Yes, you may, of course, you are allowed to apply for the JET. Even if you are an appearing graduate, you are allowed to apply for JET 2021. But if you get selected, you have to produce the certificate. Yeah, so that's what my question was. Like, I'm not Of getting course, no, response that from is the the basic. See, if it is a basic criteria, the minimum expected education, qualification, if it is graduation, then of course that certificate will be required. Yeah, I have my provisionals with me, but I haven't received my degree certificate yet. So, Sorry, do you have mark list? yes, sir. Final mark list all cleared? Yes, sir. Yeah, that will do. That will work during admission process, even if I get selected. Yeah, so that mark sheet should say you have completed all the semesters, you have cleared all the subjects from all the semesters, and you are graduate. Okay, sir. Okay, yeah, thanks. That. And you can also ask some certificate from your respective institute, university, from registrar, control of examination, or principals. They can write such transcript and they can send it to our FTI or any institutes. That you can also ask. If you don't get the final approved certificate, but institute can provide for each students some document that says that this such and such person is graduate from our institute, and it's an official document. Yeah, that you can get it. Those who have asked the question, could you please lower your hands, please? Subha has asked, though no, Subha, there is no prior requirement of theatre production as such. How is the candidate selected? Question. Just a minute, Faisal. How is the candidate selected after clearing the entrance exam? How can a candidate prepare for orientation round? No, in orientation, you don't have to prepare for the orientation round. You will be oriented on campus or in the online method. So once you have cleared the JET, it is us who will orient you in the course that you will be doing, or you have applied, say for example, and you have cleared the JET for, and we will orient you with regard to what is expected out of you in the course, what is the course is all about. And we will show you certain things, and we will speak to you about your expectations, understanding of the subject, and your aspirations in applying for that subject. And we will orient you from our side
how say FTI or SRFTI conducts that particular course and how do we do it. So you don't have to prepare anything for the orientation round. If a general category, suppose 49 students get 50-50 marks in paper, 45 students get 50-50 marks in paper 1. See, as we have said, the top number according to the ratio will be selected. It won't be considered whatever the numbers after that have got. So according to the ratio, the top number, say 75, if it is 45, then according to that they will be called for orientation. Sorry, they will their papers. क्वेश्चन क्या है? लास्ट कैंडिडेट का मार्क है क्या? नहीं, मतलब 45 को 50 मिला है और 46 को 49 मिला है, तो 46 अगर जो 45th जो लास्ट पोजीशन में है उसको जो मार्क्स है, जैसे 45 पोजीशन में 50 मार्क है और उसके 5 कैंडिडेट को भी जैसे 45 to 51 आगे 10 स्टूडेंट को भी सेम मार्क्स है, तो ऑल 10 विल बी कॉल्ड. ओके, सो दैट इज बेनिफिट बिकॉज ऑल द लास्ट स्टैंडिंग कैंडिडेट्स और 10 कैंडिडेट्स गॉट सेम मार्क्स, तो उन्हीं सभी को बुलाया जाएगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक को 50 मिलेगा बाकी 75 कट ऑफ हो गया तो बाकी 50 को नहीं मिलेगी. तो जितने भी 50 है या सेम मार्क्स है जो लास्ट स्टैंडिंग कैंडिडेट है उन्हीं सभी को बुलाया जाएगा. Sir, can I ask? Yes, Abhijit. Yes, Abhijit. Sir, I have a couple of questions actually. Yes. First of all, ask one by one. Abhijit, yes, just sir. a minute. Abhijit, just a minute. Faisal, ask your question. You had raised the hand. Yes, Faisal, sir. go My ahead. question is. Yes. Hello. Hello. Yes, go ahead. ओके सर, माय क्वेश्चन इज कि जैसे कि आप मुझे क्वेश्चन आता है और उसमें डायरेक्शन की बात मुझे करनी है और उसमें तो अगर मैंने डायरेक्शन की बात की तो इसमें रिक्वायर्ड है कि मैंने और जो डिपार्टमेंट के सिनेमेटोग्राफी है उन सब के नाम लिखने भी ज़रूरी हैं, या जिन जिन चीज़ों पे मैं जिन जिन चीज़ पे क्वेश्चन है जिन उन लोगों की ही सिर्फ मुझे नाम आंसर में. मैं समझा ही नहीं क्वेश्चन, मुझे समझा नहीं किन के नाम लिखने हैं तुम्हें. सर आंसर में डायरेक्शन पे और एक्टिंग पे और सिनेमेटोग्राफी पे अगर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, या क्वेश्चन इस तरीके से रिलेटेड है कि आपको इसका डायरेक्शन कैसा लगा, इस तरीके का अगर क्वेश्चन है, तो मुझे जो दूसरे डिपार्टमेंट के जो हैं जैसे साउंड मिक्सिंग हो गया उनके नाम लिखने भी ज़रूरी हैं, या लेकिन जिन जिन पे सिर्फ मुझे लिखना है डायरेक्शन और आपको सवाल पढ़ने के बाद सुनो, आपको सवाल पढ़ने के बाद जो ठीक लगे वो लिखिए. जी. आपको नाम किसके लिखने हैं? अलुमनाई के या कोई एक्सपर्ट के नाम लिखने हैं? उसमें किसके नाम बोल रहे हैं आप? सर जैसे कि डायरेक्शन में डायरेक्शन किसने किया मूवी का और सिनेमेटोग्राफी किसने की है, और अगर मैं सिर्फ डायरेक्शन पे बात कर रहा हूँ तो सिनेमेटोग्राफी जिन्होंने की है उनका नाम लिखना भी जरूरी है अगर सिर्फ क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड है. नहीं, ऐसा अगर पूछा जाएगा तो आप बता देना, मुझे नहीं पता. सर ओके, मगर ऐसा क्यों पूछा है, ऐसा आप सोचिए मत. There is one person, DBG Iconic, who is saying that I think I can explain what he is asking, sir. DBJ, you may have an independent seminar for this. This is not the forum to answer questions. Vaibhav Krishna is asking again and again, paper 1 में जो top scorer रहेंगे, उन्हीं का बस paper 2 check होगा. Yes. 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 Abhijit. Yes, sir. So suppose a candidate fails to make it to the final 11 this year, are they eligible to appear next year also, or does that affect eligibility for next year? Appear for JET? Yes, sir, for JET. Yeah, you can. There is no limit. You can appear for JET anytime, any number of times. But this course is valid for next year only. So for 2023, you have to give again JET examination and clear all these stages. Yes, sir. And sir, if you could please again go over the marking scheme of the MSQs, the plus 0.25 and the plus 2, how does that Okay, work? we'll go through it briefly, but this is the same document is available on JET portal.
and it's well explained, but still we can go through it briefly. Okay, sir. Thank you. There is no age limit to get selected. Mrinali. Yes, Vikram, you have any question? Yes, sir. Hi. So my question is referring to the selection of the screen acting that was mentioned, the ratio 1:45. So, I mean, ye obviously बात है, I've got this just यहाँ paper one will be evaluated of all the toppers and then the segregation among those toppers for paper two. So, 1:45 वाला ratio. So is it like यहाँ for every 225 answer sheets, one paper will be evaluated? या फिर if I could get the gist of that, sir, वो थोड़ा मेरे लिए confusing हो रहा है. For screen acting, sir. This is for everyone, my answer. Yeah. This is for every candidates, not only for acting, but all the courses. So thing is, suppose for any particular course, say there are 1,000 applicants, okay, candidates. So we will check all 1,000 copies for paper one, that is MSQ and MCQ. Right? So Okay, 1,000, all the candidates will get marks. So 1 to 1,000 आ गया. So for general category, we will call 1:, say in your case, yeah. So 1:45 for audition in general category. Okay. So in general category, we have 5 seats. Okay. तो 5, so एक सीट के लिए 45 चेक करेंगे. तो 5 seats के लिए 45 into 5. That's 225. या सो ये फर्स्ट जो नंबर 1 से लेके 225 तक जितने टॉपर होंगे उतने पूरे चेक करेंगे. ठीक है. और 225 नंबर पे जो मार्क्स होंगे, से 225 कैंडिडेट गेट्स 55.5 मार्क्स आउट ऑफ 100. ओके. एंड 226 कैंडिडेट, 227 कैंडिडेट, उसके 10 कैंडिडेट भी अगर 50.5 मार्क्स सेम लाते हैं तो उन्हीं सबको बुलाया जाएगा. ओके. वी डोंट रिकमेंड. सो बट 55.5 के बाद 55 को नहीं बुलाया जाएगा. सो ऑल द कैंडिडेट्स फ्रॉम 1 कैंडिडेट टू 225 प्लस 225 के जो स्टैंडिंग है उसके जो मार्क्स है उसके सिमिलर मार्क्स जितने भी कैंडिडेट को आगे मिलेंगे वो सबको बुलाया जाएगा. ठीक है. दिस फॉर ऑडिशन. एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Yeah, this is for all the candidates. Yeah, thank you. Abha, you have a question? Hello, sir. Yes, I have a question. My question is very simple. Like, if there's a foundation for the language and I'm choosing English as my language, but in between I have to mention a quote which is in Hindi, so I can mention it. Yes. Yes, you can. Okay. Oh, sir, one more. Just don't go on mixing two languages for a longer duration of time. If it is something very specific, like if you have to write, say, muhavra, for example, then you may write it in Hindi, but only for that portion. Yeah, okay. Thank you. Yes. Rachel, you have a question? यस सर. मेरा सवाल ये था कि सर अगर मैंने EWS के लिए अप्लाई किया है लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है लेकिन एक स्लिप मिल चुकी है, तो क्या मैं EWS से अप्लाई कर सकती हूँ? Yes, your time till 3rd of December. So can wait maybe later 10-20 more days. See if you can get that certificate. Okay, sir. A possibility. And so, but don't wait for at least last moment. You should not miss because of you're not getting certificate. If so I'm maybe, not, sorry sir, if I'm not getting the certificate, so can I apply by the slip I'm getting? Yeah, you can apply, you can upload, you can also give a JET examination. There is no harm in it. Okay, we are allowing you to get JET examination. But if you get selected for course, then you have to submit your certificate. That will be cross-checked by a committee in the respective institutes. And if this is true, we find that this is true and genuine, you will be allowed. Okay. Raghav? Okay, sir. Thank you. Yeah. Raghav, you have a question? Go ahead, please. Pankaj? Vivek? Advait? Yes, Advait.
एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, जस्ट क्रॉस चेक। ईडीएम और टीवी साउंड, मतलब एफटीआई के लिए और एसआरएफटीआई के लिए। हाँ यस, वैसे भी ग्रुप बी में भी एक ही होगा, अगर ग्रुप बी में, हाँ या सी का भी एक ही है। ये आपने, ये अद्वैत कहाँ देखा था आपने ये? हाँ 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 हाँ। हाँ ठीक है, ऑल राइट, ओके नहीं, ओके, यस यू आर राइट, या ठीक है, सेम ही आ जाएगा। यस, थैंक यू। वेंकट। मेरा क्वेश्चन बाकी था। हाँ विवेक, वेट जस्ट अ मिनट। यस वेंकट, गो अहेड। सर, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट मिलने में अगर लेट हो रहा है 2 तारीख 3 तारीख तक अगले, तो दिसंबर के, तो क्या करें सर उस हालत में? आपने अप्लाई किया है, वो अप्लाई किया है? नहीं सर, अभी वेट कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमने नहीं। प्रोसीजर के लिए दे दिया है सर, नॉन क्रीमिलियर के दे दिया ना आपने? हाँ सर। हाँ, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा वेट कीजिए, अभी अपने पास 3 तारीख तक का समय है यस सर। अप्लाई करने के लिए। हाँ, तो ऐसा नहीं कि आपने लेट सबमिशन किया तो आपका एलिजिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं। पर आप और 4-5 दिन वेट कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं करने के लिए। अगर आपको 3 तारीख तक अगर मिलता नहीं है तो हाँ, अगर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अलग है कि एक ही दे रहे हैं आप? एक ही है? कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है? ये सर, मेरे पास इस मतलब वो जो नॉन क्रीमी सेंटर की जो कास्ट होती है हमारी, तो यहाँ जो महाराष्ट्र में जो मिलती है वो सेंटर और नॉन क्रीमिलियर एक ही मिलता है सर, वो एक साल के लिए होता है। ओके, एक साल के मिलता है। ओके, प्रीवियस ईयर का आपके पास है? सर 2 साल पुराना है सर, एक निकाला था उस वक्त। अच्छा, नहीं, आप फॉलो अप कीजिए, मिलना चाहिए आपको। ओके सर। या मिलना चाहिए। अगर फिर भी आपको अगर मिलता भी नहीं है तो आप जेट एग्जाम दे सकते हैं। यस सर। उसके लिए ब्लॉकेज नहीं होगा। पर जब जेट एग्जाम के बाद अगर टॉप में रेशो में आ जाती है, आपका सिलेक्शन होता है, देन वी हैव टू प्रोवाइड। ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई कर सकता हूँ सर, अगर नहीं मिलता सर्टिफिकेट तब तक तो फिर भी? नहीं, देयर इज नो ओबीसी कैटेगरी ना, ओबीसी एनसीएल इज अ कैटेगरी। यस सर, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी से। हाँ, उसी में होगा तो ही होगा। दिस नो, अगर ओबीसी एनसीएल में है तो भी आपको इसमें मिलेगा, अदरवाइज यू कैन अप्लाई थ्रू जनरल। अगर आप स्कोर करते हैं तो आप जनरल में भी कम्पीट कर सकते हैं। पर अगर सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिला सर, तो क्या मैं फॉर्म भरते वक्त नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी से फॉर्म भर सकता हूँ सर? भर सकते हैं आप। ओके, कैन रीसबमिट, या सबमिट कर सकते हैं, बाद में सबमिट कर सकते हैं सर। हाँ, यस। ये जो समर्थ है, समर्थ गुप्ता, इज द सेम आंसर अप्लाइड टू यू आल्सो? समर्थ, और आई मे बी? Yes, sir. Yeah, Yes, okay. sir. Yes, sir. But I request everyone to just kindly follow up with the local authorities to. Sir, also I have to ask that if I have uploaded the 2018 certificate, so ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा application cancel हो जाएगा? No, for JET it won't cancel. You can still give an exam, but if you get selected, then you have to resubmit your. Yes. Yeah. Because I have already uploaded my 2018 certificate of OBC NCL. Yeah, but and that, I have checked it later on that I have not to do that. I think JET portals still allows you to modify your application. Okay, in case you get new certificate, you can resubmit it. Okay. But I have called the helpline and they said that you cannot edit it. Okay, yeah, that's it. Okay. So what you can do for your safety purpose, you can still send email to on that email ki I got a new certificate, maybe considered. So it will be on your records. Okay, and if मतलब नहीं होता है ऐसा तो what to do? Nothing, you will still allowed to give a JET examination. There won't be blockage. But once you get, if you get selected, then you need to resubmit it. Yeah, okay. Thank you. सर मेरा क्वेश्चन था। विवेक, गो अहेड।
हाँ सर, ये मैं बोल रहा था एक्टिंग डिपार्टमेंट के एग्जाम्स में हाँ जैसे ऑस्कर विनर एक्टर्स वगैरह का परफॉर्मेंस जो होता है उसको क्रिटिकली एनालाइज करने का क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली आते रहता है। तो उसमें जो डायलॉग्स उन्होंने डिलीवर किए हैं वो तो इंग्लिश में होंगे, तो पार्शियली इंग्लिश लिखना इन द सेंस कि हम उस चीज़ को इवेलुएट कर रहे हैं या फिर क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, तो क्या ये चीज़ पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है मार्किंग के स्कीम को लेके, क्योंकि किसी एक ही लैंग्वेज में अगर लिखना आप है या एक और है सुनिए, अगर जो आपका जवाब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को रिलेटेड है जहां पे आपको इंग्लिश में डायलॉग लिखने जरूरी है तो आप जरूर उसे लिखिए। हिंदी इंग्लिश का मिक्स उसमें मत कीजिए जहां पर आपको कोई अपना जवाब लिखना है कि बीच में 4 लाइनें लिखी कि आज हवा बहुत अच्छी है, ठंडी हवा चल रही है एंड द सनशाइन इज ब्राइट, ओके ये मिक्स मत कीजिए। सर कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के आते हैं, जैसे जो स्तानिस्लावस्की की किताबें हैं उनको जब हिंदी में भाषांतरित किया गया है तो जैसे क्वेश्चंस आते हैं, दृश्य विधान एक शब्द है विच मीन्स सीन, तो दृश्य विधान लिखना उस थोड़ा सा क्लिष्ट हिंदी है, ये क्लिष्ट कैटेगरी का, तो क्या उसके बगल में सीन मेंशन करना सही रहेगा? आप सीन लिखिए ना, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक, ओके थैंक यू सर। एक सवाल यहाँ पे है, एक पट से ले लेता हूँ। एक्सेप्ट बैचलर्स डिग्री इज देयर एनी अदर डिग्री म्यूजिक साउंड डिजाइन के लिए म्यूजिक से रिलेटेड कोई डिग्री चाहिए तो नहीं चाहिए। जो आपको बताया गया बैचलर्स डिग्री जो बेसिक क्वालिफिकेशन है जो हमने बताए थे अलग अलग जो भी है, उसके अलावा और कोई चीज का कंसिडरेशन नहीं है जेट के लिए। ठीक है, एक क्या था, अच्छा हॉलीवुड की फिल्म के बारे में आप लिखेंगे तो आपको अपर एज मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो फिल्म अच्छी लगी उसके बारे में आप लिखिए। आप उसके बारे में कैसे लिखते हैं उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। आभा सौरभ, इफ यू हैव आस्क्ड योर क्वेश्चन प्लीज लोअर योर हैंड्स। पंकज चौहान प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू सर। सर मेरे को ये चीज़ पूछनी थी कि जब लास्ट ईयर एफटीआई का एग्ज़ाम हुआ था तो रिटर्न में एक्चुअली मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े थे और मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वो पूरा कैटेगरी मेरा डिस्क्वालीफाई हो गया क्योंकि मेरे मार्किंग बहुत ज़्यादा कम आए थे। तो मेरे को बस इतना पूछना था कि इफ़ आई अटेम्प्ट मतलब मैं सारे क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरा पूरा सेक्शन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा क्या? मतलब लास्ट ईयर के रिगार्डिंग पूछ रहा था सर मैं। तो डिस्क्वालीफाई हो गया था, रिलेटेड क्वेश्चन ना आप समझा नहीं आपको बात। आपका डिस्क्वालीफाई हो गया ये कैसे पता आपको? सर बिकॉज मार्किंग मेरे को ऐसा लगा कि मार्किंग बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि सर मेरे 46 अराउंड मार्क्स आए थे और मेरे 21 एमसीक्यू सही थे। तो मेरे को ऐसा पर्सनली लगा कि शायद डिस्क्वालीफाई हो गए मेरे सारे क्वेश्चंस जिनके भी मैंने आंसर किए थे। डिस्क्वालीफाई तो नहीं होगा अगर आंसर आई डोंट नो मींस अप्रोप्रिएट नहीं है सर, हो सकता है बट ओके सर, मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, मार्किंग कम था मेरा। इस साल आप नहीं, we don't want to comment on that. We are addressing questions related to JET 21 only. My advice would be to read the questions first and then answer. Okay sir. Thank you sir. Fazil. Fazil, you have a question? It's gone. Yes. Yes. Good evening. Yes, Fazil. Yeah. So मेरा क्वेश्चन ये था सर कि इस बार का जो पेपर का जो पैटर्न है उसमें एमसीक्यू है और एमएसक्यूज हैं और जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 20-30 के रेशियो में। सो एमसीक्यू का तो उसमें क्लियर था कि इट विल बी रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड arts and culture, but MSQ में it is mentioned that the questions will be related to acting, basically your specific area field. So what sort of questions can we expect there, if you can give us an idea please? So I will not give any hint with regard to that, but again and again we are saying that it is going to be towards the area of your specialization only. Okay. So is it तो आप जितना सोच सकते हो कि एक्टिंग के बारे में किस तरह का सवाल आ सकता है वो आप सोचिए। Okay, so it can be like a descriptive question where a situation is given and we are asked to answer on that, or I can't answer like... that, Fazil. Okay, no problem. At the same time, I want
You may have a look at the earlier question papers as reference how the exams have been. Okay. Yeah, and from that you may judge. Yeah, I did look at the paper, but in previous papers, the MSQ sections were not particularly separate. They were mixed along with the MCQ. So I wanted to know, because if the MSQs are completely separate, so okay, we'll analyze. And at the same time, in the descriptive questions, there's 50 of which are of 50 marks. Do we only get the limited space which is provided in the question paper to write the answer, or we can get an extra sheet if we are having something extra to write? No, there will be a particular space provided for a particular marks, and you first have a look at the space that has been provided, and accordingly you write your answer. Okay, so we'll have to structurize our answer according to the space. Space no additional provided. sheet will be given. 10 marks, say for example, 20 marks, so specific, but that is ample space. I may assure you that. Yeah. Okay. Thank you so much, sir. Raghav, are you here? Yes, I'm sir. asking you again. Yes, go ahead. Yes, Ask sir. your question. Sorry, that time as internet got disconnected. No problem. Sir, my question is, are the number of seats similar, or have they increased or decreased in any of the course? Yeah, one seat is increased, that general EWS category as per government norms. So earlier we had 10 seats, now we have 11. Well, this seat is reserved for general EWS candidate. Okay, sir. Thank you, sir. That's all. Thank you. Kaustubh Kove. Kaustubh, are you here? You want to ask a question? हेलो आवाज आ रही है सर? हेलो यस सर, मैं तब थोड़ा कंफ्यूज हो गया था. किसी ने सवाल पूछा था कि फर्स्ट पेपर में जो टॉपर रहेंगे उनका ही सेकंड पेपर चेक किया जाएगा. तो उसके लिए सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि अगर फॉर एग्जांपल 1 में थोड़ा कम आता है और सेकंड में मैं ज़्यादा स्कोर करता हूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस में मैं लोअर में आ जाऊंगा कि सर ऑर्डर में. वो कंफ्यूजन था सर. नहीं, आपका सवाल समझा नहीं मैंने अभी. क्या कंफ्यूजन है? सर, अगर फर्स्ट पेपर में मुझे कम मार्क्स मिलते हैं, आपने बोला था ना कि हाँ, और सेकंड में मैं ज़्यादा स्कोर करता हूँ तो मेरा ओवरऑल जज होगा या क्योंकि सर एक बंदे ने सवाल पूछा था अभी कि फर्स्ट पेपर में जो टॉपर रहेंगे मतलब परसेंटेज वाइज उनका ही सेकंड पेपर चेक किया जाएगा. तो नहीं, टॉपर नहीं हमने बोला कि जो रेशियो है, जिसे हमने 1:15 कैटेगरी 15 पेपर रखे जनरल कैटेगरी के लिए. तो फर्स्ट 75 जो हमारे पास मुझे इन FT आया है, फॉर ईच कोर्स वी हैव 5 सीट्स रिजर्व फॉर जनरल कैटेगरी. ओके, ओपन के लिए. तो रेशियो इज 1:15. सो 15 into 5 सीट्स, दैट इज 75 पेपर्स. तो 75 पेपर्स हम चेक करेंगे, उनके पेपर 2 चेक करेंगे, और 75 पेपर हम दोनों कंसिडर करेंगे, पार्ट पेपर 1 एंड पेपर 2. ऐसा नहीं कि पेपर 2 ही खाली कंसिडर करेंगे. तो अगर आप 75 में भी है, बट अगर आप पेपर फर्स्ट में से 74th नंबर पे है, से 30 में से 50 में से आपको खाली से एग्जांपल 27 मार्क मिले और 74th पे है, और आपने डिस्क्रिप्टिव भी बहुत अच्छा लिखा, तो आप 74 से टॉप 10 में आ सकते हैं. तो वो दोनों कंसिडर होंगे. ओके सर, ये बस ये डाउट था. थैंक यू सर. दोनों कंसिडर होंगे. या ओके, लेट अस शो देम दैट. नहीं, उनका सवाल था ये रेशियो उनको ओरिएंटेशन. So let us have a look at the orientation now. The next stage after the JET. So as of now, we may have 2 sets of orientation and interview for SRFTI and FTI. That is separate orientation and interview. But that's the second stage after the JET is over. And for the orientation and interview, we have, except for screen acting, we have the ratio that we call for orientation and in interview is 1:3, 1:5, 1:5, and 1:7. So in this ratio, we call our
candidates for orientation and interview. And this is the example, like for again 11 number of seats for general category. We say that is 1:3 ratio. So we call 15 candidates which have qualified the JET, and they are the merit holders of the JET examination. This is how we shortlist for the audition based on the JET 2021 merit. So it is for general, OBC, NCL and general EWS, it is 1:9. So for each seat, 9 candidates are called for the audition, and then SC/ST 1:15, then general PWD, OBC, NCL, PWD. General EWS, PWD 1:5 is the ratio, and SC PWD and ST PWD 1:21 is the ratio. ये एक्टिंग के लिए और बाकी सभी के लिए जो ओरिएंटेशन और इंटरव्यू का जो रेशियो है, जो आप यहाँ पे बॉटम पार्ट में देख रहे हैं, वो सेम ही है, बट क्योंकि यह ऑडिशन एक्टिंग कोर्स के लिए ऑडिशन ये सेकंड एडिशनल एक स्टेज है, उसी के लिए हमने उसको ज़्यादा कैंडिडेट बुला रहे हैं, 1:3 द रेशियो में बुला रहे हैं हम लोग, क्योंकि वी हैव द पूल ऑफ more candidates who can perform in an audition, because acting is meant to what can say the performance based course. So there is another selection level is introduced, or it is there for candidates who can show their talents through their performance and through orientations, and those marks will be counted there. So that is a different ratio for only orientation, so only for audition. This ratio is for all the papers, all the courses except acting. Okay, जब भी आप जेट एग्जाम पास करते हैं, आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसको वो भी क्लियर हो गया। आप ओरिएंटेशन के रिटन एग्जाम्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने के बाद और इंटरव्यू के जो आपको मार्क्स मिलेंगे, तो एवरी स्टेज आपको 100 आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। जैसे जेट के लिए आपको आउट ऑफ 100 पेपर है, ओरिएंटेशन के लिए आउट ऑफ 100 आपको यहाँ पे मार्क मिलेंगे, और इंटरव्यू के लिए आउट ऑफ 100 क्वेश्चन होंगे। तो आउट ऑफ 100 इसका वेटेज जो है, जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट लगेगा, तो फाइनल 100 में जेट के 20% मार्क्स काउंट किए जाएंगे, जो FTI में या जो ऑनलाइन ओरिएंटेशन होंगे, ओरिएंटेशन के 50% मार्क काउंट किए जाएंगे, आपका परफॉर्मेंस काउंट किया जाएगा, और इंटरव्यू के 30% मार्क्स काउंट किए जाएंगे। ओरिएंटेशन में भी देयर इज प्रैक्टिकल एंड आल्सो रिटन एग्जामिनेशन। कुछ टास्क आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा, उसके कुछ मार्क्स रहेंगे, कुछ रिटन पेपर्स रहेंगे, उसके कुछ मार्क्स रहेंगे। तो ये ब्रेकडाउन है। तो ये फाइनल वेटेज आपको जेट के लिए 20 मार्क्स, ओरिएंटेशन के लिए 50 मार्क्स और इंटरव्यू के लिए 30 मार्क्स, इसी बेस पे आपको फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा। या एक्टिंग कोर्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट वेटेज यहाँ पे है। जो जेट मार्क्स के आधार पे आपको ऑडिशन में बुलाया जाएगा, और ऑडिशन में भी आपको प्रैक्टिकल और कुछ रिटन एग्जाम देनी होगी, उसको भी आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा यहाँ पे। और ऑडिशन होने के बाद ऑडिशन के 50% मार्क्स और जेट रिटन एग्जामिनेशन 50 मार्क्स दोनों को मिला के रिजल्ट 1 प्रिपेयर किया जाएगा। ओके, दैट इज जेट मार्क 50% एंड ऑडिशन मार्क 50%। और रिजल्ट 1 के जो मेरिट लिस्ट होगी, उसी हिसाब से आपको ओरिएंटेशन और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और ओरिएंटेशन के बाद रिजल्ट 1 जो ऑडिशन और जेट का जो आपका रिजल्ट है, उसके 50% मार्क्स और ओरिएंटेशन और इंटरव्यू की 50% मार्क्स, इसी बेस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी। ठीक है, इसमें लास्ट लाइन भी है कि आपको दिस वेरी इम्पोर्टेंट, इवन आफ्टर योर सिलेक्शन, इफ यू आर सिलेक्टेड, देयर विल बी a medical test on the campus. Student has to go through medical test and give a fitness certificate, then only can eligible to take admission, even if we selected.
These are important dates. Those are already available on JET portals. JET portal, Yeah, yes. the last date of registration is 2nd December 11 PM. रात के 11 बजे तक आप upload कर सकते हैं. But we recommend that don't wait for last moment. Submit your application before, at least 24 hours before, to avoid any technical glitch. Release of admit cards from 8 December to 17 December. You can download your admit card. And take a print also. Yeah, take a print. Those instruction you can find, the behavior and the instruction for JET examination, that instruction you can find on JET portal. The exam date would be on 18th and 19th. If someone is giving more than 2 question papers, so maybe you can find out on which date you have your question paper. Announcement of JET result will be of February, maybe last week, tentatively. And orientation interview will be on April or May 2022. Yes, so that is tentative timeline. Okay, any other question related interview and orientation? What is the qualification and disqualification criteria for medical test? No, for certain, it is mentioned if you go through the FTI prospectus, page number 20, page number 27. One sec, I'll just guide you through page number 21. What happens during the orientation? Yes, I have already answered that question. What happens during the orientation? It is asked to orient you. In descriptive, there is a mention including sketches and photographs, etc. That may be asked with regard to the ADPD thing, like art direction and production design. Sir, would you like to answer that? Vikramji? Yeah, is this Nimesh's question that we are? Yeah. Okay. It is fairly a simple thing. There will be questions which will require you or the candidate to draw something. Practically draw something to express your thoughts, to express your imagination, to express what you understand by the question. So it basically is going to be a supporting document of your ability to understand your ability, how you can draw, how skillful you are when it comes to expressing yourself through your drawings. Okay. Does that answer the question? The sketch question is compulsory in screen acting also. No, in that case, if there is a question in any other discipline than art direction, production design, it is not looking at your ability to sketch. It is looking at how you describe something. आप कितना अच्छा ड्राइंग या स्केच निकालते हो उसके लिए वो क्वेश्चन नहीं है. अगर जरूरत पड़ी तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हो अपने एक डिजाइन से. It becomes mandatory only for the candidates who are applying for art direction and production design. So the quality of drawing and the strokes and the composition, that will be analyzed and evaluated. But for the rest of the people, the story is different. Venkat, is there any space provided? No, the space is provided. You may use it, marking it as a rough work. Medical test, sir will answer you. Actually, all these courses are very demanding physically. So the fitness is a primary thing, but there are very specific medical thing which sir will take you through. I answered.
say once again that एक एग्जांपल दे सकता हूँ इसके लिए. हाँ दो ना. So for medical tests, जैसे कुछ course है like editing or cinematography. So color blindness is we need to check. If you are selected and you are got through all these stages, and after that we found that you have some color blindness or maybe, so that color blindness is not allowed for courses like editing and cinematography. So that is must. So that kind of check we need to have. Okay. And for all PWD candidates, those who are submitting their PWD certificates, for those also we need to have some medical test that is done by the medical officer appointed by the institute to check some kind of feasibility or ability of the candidates. Like somebody's PWD candidate is applying for cinematography, but cinematography requires to handle a lot of heavy equipments like lights, cameras, and lenses. So for that, we may use the equipments and instruments from the institute physically to check if person can able to handle it. That's the question. So for those particular things, we require to have tests. Other than this, the medical is general tests like blood test and general physical tests. That is. For certain areas like blindness, color blindness, we need to have a specialized check done by the eye specialist. That is. Srishti, you have a question? Yes, thank you, sir. Yes. So actually, I wanted to ask for acting, what are the medical tests that will be taken, like you said, for editing and everything, cinematography, like color blindness, and what is for us for acting? No, acting, there is for all the other courses, there is a general medical test like your blood test, blood pressure, and all these things, diabetes, general test, medical test. Okay. Only For we have to certain, pass for out general medical test, right? general medical test, for certain areas like I just said for cinematography, so that is required with specific. We don't can't say the student is not eligible to go through the course if it is color blindness for the cinematography course for particular course like that. Right? Okay. And what are the reasons that will be come out that will come in medical test that for because उसके लिए फिर हम नहीं कर पाए like acting के लिए. Sorry, I'll explain again. No. I'll explain again. अगर ऐसा कौन सा मेडिकल टेस्ट खराब नेगेटिव रिपोर्ट आए कि हम एक्टिंग के लिए उस रीजन से सिलेक्ट ना हो. No, for acting course, there is a general medical test is required. Okay, so in medical test, if found that you are not able to take this course continuously for 3 years. So if there is any comment from that medical officer, then only we can just think of. Other than this is a general test. Okay, thank you, sir. अटल सर मला प्रश्न विचारायचा होता. हिंदी में या इंग्लिश में पूछो. सर स्क्रीन एक्टिंग में जब ऑडिशन राउंड होगा तो वो ऑडिशन हम सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं या कोई अदर लैंग्वेज में लाइक मराठी और हेलो सर. हाँ. Mute yourself. फॉर एक्टिंग ऑडिशन के लिए आपको 2 लैंग्वेज में आपको कुछ डायलॉग्स प्रोवाइड किए जाएंगे या स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाएंगी हिंदी और इंग्लिश में. और उसके अलावा विदाउट डायलॉग्स कुछ आपको आई डोंट हैव दैट वर्ड. व्हाट इज दैट? मोनोलॉग? नहीं, मोनोलॉग. या सो मोस्टली दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश. आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे. सो यू हैव टू चूज एनी वन लैंग्वेज एंड डू इट. ओके सर, थैंक यू. Okay. नमस्ते सर. Yeah. Is it Atal? है सर. Sorry. Yeah. Go ahead, please. सर मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो जैसे किसी स्टूडेंट को इंग्लिश नहीं आती और उसे ऑडिशन या ओरिएंटेशन राउंड में बाहर कर दिया जाएगा? नहीं, बाहर नहीं किया जाएगा. और सर क्या जेट जो 2020 की कट ऑफ वेबसाइट पर मौजूद है एफटीआई की? 2020 क्या मौजूद है?
जेट 2020 की जो कट ऑफ है वो वेबसाइट पर मौजूद है क्या? FTI वेबसाइट पे मौजूद होगी, आप देख सकते हैं। और सर जैसे ये जो आप ये सेमिनार कर रहे हैं, क्या ये आपके जो FTI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर मिलेगा या किसी फेसबुक यूट्यूब आपके किसी भी चैनल पर? नहीं, ये अभी सेमिनार लाइव हो रहा है ना अभी। हाँ, और सर ये जो ये पेपर होंगे सारे जेट के, क्या इन सभी पेपरों का नॉर्मलाइजेशन होगा जिस तरह SSC करती है, यूपीएससी कई कई जगह करती है? नॉर्मलाइजेशन मतलब, सॉरी मैं समझा नहीं। सभी जो पेपर है उसका डिफिकल्टी यानी कठिन लेवल और उसके सभी कठिन लेवल को मिला के जो एक कट ऑफ तैयार की जाती है, यानी जो पेपर का लेवल देख के कि ये पेपर कठिन है, ये सरल है। बट यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक ही पेपर होगा ना, सो नॉर्मलाइज कैसे करें हम लोग? अगर कोई A B या जैसे कोई 2 सब्जेक्ट से बनेगा तो, जैसे कोई डायरेक्शन में कोई स्क्रीन एक्टिंग में, तो फिर नहीं, दोनों का कट ऑफ लिस्ट अलग होगा। अगर आपने डायरेक्शन में किया है तो आप डायरेक्शन में ही पास हो जाओगे, आपको एक्टिंग अलाउड ही नहीं करना है ना। सो जो आप जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं उसी कोर्स का पेपर आपको आ जाएगा, उसी का पेपर आपको लिखना है। सर मुझे एक चीज और पूछनी, जैसे सर्टिफिकेट है, जैसे किसी के पास राज्य सरकार का सर्टिफिकेट है, किसी के पास केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट है, तो उसका क्या है सर? जो सर्टिफिकेट्स आपको कौन सर्टिफिकेट की करें, OBC NCL यानी कास्ट सर्टिफिकेट। हाँ, जो कास्ट सर्टिफिकेट के एग्जांपल्स हमने जेट पोर्ट पे दिए हैं, जेट पोर्टल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका कंटेंट देख लीजिए। ठीक है जी सर जी। तो कंटेंट अगर आपको सेम रहेगा सो दैट विल बी अलाउड। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। वेंकट ये पूछना चाह रहे थे रफ वर्क के लिए, तो उसके लिए अलग से स्पेस आपको नहीं दिया जाएगा मार्क किया हुआ रफ वर्क के लिए। आप यूजुअली होता है, अगर नहीं होगा तो आप अपने हाथ से वहां पे रफ वर्क लिख के you may write that, you may utilize some part of your paper, write as rough work. ये है क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस फॉर अ पर्टिकुलर। हेलो सर। हाँ सागर। सर मुझे पूछना था कि ऑडिशन के लिए आप लोग मोनोलॉग देंगे या हमें ही तैयारी करके आनी है? आपको 2 ऑप्शन होंगे, एक आपका खुद का होगा, एक FTI ने दिया हुआ होगा इंस्टीट्यूट में। थैंक यू सर। हेलो सर, एक जेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था। हाँ फाजिल जस्ट अ मिनट, सॉरी। हाँ फाजिल। यस सर। सो जेट में जैसे सर 50% का ऑब्जेक्टिव होता है, 50 का डिस्क्रिप्टिव होता है। सो ऐसा भी कोई क्राइटेरिया है कि पहले चेक ऑब्जेक्टिव होता है और उसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मार्क्स का एक कट ऑफ क्रिएट होता है, अगर वो क्लियर करता है कैंडिडेट तो ही उसका डिस्क्रिप्टिव चेक होता है, या फिर पूरा पेपर चेक होता है वन गो में और उसके बाद फिर मार्क्स कैलकुलेट होते हैं? फैजल जी, आप लेट ज्वाइन किया आपने? लेट आया तो वी ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन, बट यू आंसर इन ब्रीफ कि जो आपका क्वेश्चन पेपर 1 है, जो ऑब्जेक्टिव MCQ और MSQ पहले चेक किया जाएगा। जो हमने यहाँ पे रेशो जो दिखाया था उस हिसाब से वो पेपर 2 चेक होगा। ओके ठीक, मतलब बेसिकली वो पहले उसके बेसिस पे असेसमेंट, फिर पेपर 2 चेक होगा जो कि यस। थैंक यू सर। यश, you have a question? Yes, go ahead. Is it the same question that is written here? Graduation Yes, marks? sir. जी सर।
यश, अभी आप 4 से 6 के बीच में भी थे क्या एक बार? जी नहीं सर। अच्छा, पूछिए सवाल। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोरोना की वजह से सर जो डिग्री है ना सर, वो एक सेमेस्टर मेरी लेट चल रही है, तो मेरा सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है ना सर, वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाया है। तो सर जो मैं फॉर्म फिल करूंगा, तो मैं मार्क्स के वहां पर लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स फिल कर दूं? हाँ, जो आपके पास लेटेस्ट जो मार्कशीट है वो कर लीजिए, सबमिट कर लीजिए। बट आप ये भी देख लीजिए कि आपका फाइनल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन कब होने वाला है। अगर वो मार्च टू मई 2022 तक हो रहा है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि आप तक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हो। वो अगर दिसंबर 2022 तक जाएगा, देन यू मिस द चांस। ओके, सो वो अभी मुझे पता नहीं कि अभी कौन से यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और आपका फाइनल एग्जाम कभी आपका शेड्यूल होता है। आपका फाइनल एग्जाम आप कभी तक अज्यूम करें, कभी तक शेड्यूल होगा? जी सर, सर आई एम परस्यूइंग बीबीए फ्रॉम एमएलएसयू उदयपुर। तो यहाँ पर सर जो हमारी डिग्री के लास्ट सेमेस्टर होता है वो इंटर्नशिप होता है, तो हमारा डिग्री सर मोस्टली 3 महीने पहले डिग्री मिल जाता है हम लोग को। तो सर उस हिसाब से हमको अप्रैल एंड तक मिल जाना चाहिए डिग्री। अप्रैल 2022? जी सर। ओके, ठीक है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस इट। ओके सर, थैंक यू सो मच। Dhananjay, you have a question? Fazil, Yash, you may please lower your hands. Kushal has asked, what if a person has a color blindness for a particular color? You have the answer in your question, Kushal. विक्रम जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं कुशल? कुशल, आर यू देयर? Kushal, are you here? Yes, sir. Sir, I want to apply for cinematography actually. Yeah, then it is a problem. It is a huge problem then. So I have a question. If we have a past injury like fracture, something kind of fracture, and I'm applying for cinematography, but I'm physically well now, so there is an issue? Sorry? No. Huh? Sorry. We didn't get your question right. Can you ask? सर अगर मेरा पास्ट में कोई एक्सीडेंट हुआ हो, मेरे को फ्रैक्चर हुआ हो पाँव में, और अभी मैं ठीक हूँ, तो Yeah, that's fine. Yeah, you can give, no issues. सर वेबसाइट पे पर्टिकुलरली डोमेन के स्पेसिफिक में वो दिया हुआ है कि आप अगर इस डोमेन से हो, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, मतलब पीडब्ल्यूडी वाला, तो आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो जैसे तो वही रहेगा ना, मतलब? नहीं, ये जो आप if you go to the prospectus, FTI prospectus page number 10 and 40, okay, जो पेज नंबर 10 पे लिखा है कि आप PWD रिजर्वेशंस कौन से सब्जेक्ट के लिए है। ओके, तो ये साल सिनेमाटोग्राफी के लिए PWD रिजर्वेशन है वहाँ पे जनरल कैटेगरी में। सो उसमें क्या है, उसके नीचे लिखा होगा दिस इज मार्क्ड एज अ डी। ओके, तो डी सीट उसमें 1 सीट इज रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ओके, उसमें क्या क्या डिसेबिलिटीज लिखा है उसमें लिखा हुआ है। अगर आपके पास ये कोई डिसेबिलिटीज है तो आपके लिए ये सीट जनरल कैटेगरी में सिनेमाटोग्राफी में 2022 में रिजर्व है। यू कैन अप्लाई फॉर दैट। और सर वहाँ पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि मतलब अगर आपको ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आप इस स्ट्रीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब बताइए पेज नंबर कहाँ पे आपने पढ़ा ये? सर प्रोस्पेक्टस में ही पढ़ा था मैंने सर, मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट इस बेंचमार्क डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है तो पर्टिकुलरली इन कोर्सेज के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता। यस, लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लीजिए। अभी कौन से जैसे आप लिखा होगा वहाँ पे कि कलर ब्लाइंडनेस होगा तो आप सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लिखा तो हुआ। अगर जैसे कोई सिनेमाटोग्राफी के लिए अप्लाई कर रहा है और वहाँ पे जो डिसेबिलिटी लिखा हुआ है और वो नहीं है कैंडिडेट को, तो कोई एग्जाम मतलब जो मेडिकल टेस्ट होगा उसमें कोई इशू थोड़ी होगा सर, मतलब रिजल्ट्स में उसके? नहीं, उसमें लिखा नहीं होगा, बट एज अ इंस्टीट्यूट वी नीड टू क्रॉस चेक दैट वन स्टूडेंट, बिकॉज समटाइम होता है कि कई कैंडिडेट को पता नहीं होगा कि उनको कलर ब्लाइंडनेस है। ओके, स्लाइट कलर ब्लाइंडनेस, उसमें परसेंटेज भी होता है ना, so not 100% color blindness but maybe 40%, maybe 60%. Okay, so someone might not aware that he or she is color blindness. Okay, it's very minor,
For that, we need to get cross-checked here before admit the students. Okay, that is important. Okay, thank you, sir. So, so may I ask the question? Yes. Kushal, yes, please. Kushal, go ahead, ask your question. So, as I know that I have a Newton color blindness, like I can't like rectify between green and brown. Okay, the lightest green and the brown. So, will it be considered as benchmark disability or For which course? so for cinematography? Yeah, that will be considered. Yeah, consider means we need to get examined once if you selected in top 10 in that category. So need to go through medical test. Okay. Okay, sir. हेलो Dhananjay, are you here now? Okay, yes. यस सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि अगर स्टूडेंट ने डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों के लिए एनरोल किया है और रिटर्न एग्जाम में दोनों भी क्लियर हो गए, तो वो जो सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड है ओरिएंटेशन एंड इंटरव्यू, तो वो दोनों के लिए बैठ सकता है कि चूज करना पड़ेगा? लाइक जस्ट वांट टू नो। नहीं, कौन से दो कोर्सेज फॉर एग्जांपल यू सेड? डायरेक्शन एंड एक्टिंग, डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले एंड सेकेंड एक्टिंग। हाँ, अलग अलग है, वो दो ग्रुप्स अलग है उसके। हाँ, तो अगर रिटर्न एग्जाम दोनों के भी क्लियर हो गए तो वो थर्ड एंड सेकेंड राउंड जो है तो वो दोनों के लिए बैठ सकता है कि नहीं? ऑफ कोर्स बैठ सकता है। Okay, and after like final selection we have to choose one, right? हाँ, in fact to make it more clear, आप तीनों के लिए कर सकते हो। एक्टिंग FTI में इंडिपेंडेंट कोर्स है, वहाँ पे भी आप कर सकते हो। डायरेक्शन 2 कोर्स है, FTI में और SRFTI में। तो अगर जेट पास होते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर FTI also and SRFTI also. So you have 3 chances. Okay. तो एक्टिंग में भी कर सकते हो और you can choose between get selected in the direction. So you can also select the institute like you want to join in SRFTI or in Film Institute FTI. So 3 options. Okay, sir. Like my question is, if I get selected in both the like acting also and direction also, so shall I be eligible to sit both the like second round and third round for the both the field like acting and direction? Yes, दोनों yes. के लिए मैं second third round attend कर सकता हूँ ना? Yes, कर सकते हैं. And after final selection, that I have to choose. Yes. Between. Yes, you can choose. Okay, understood. Can a candidate fill another form if something went wrong in the first form? So kindly for any question related to issues related to submission, kindly contact JET portal, number given on JET portal, email ID and phone number. Okay. So I recommend, even if you resolve your query through phone, I request you or maybe recommend you to also send email on that email ID. Okay, that is it. Abhijit. Abhijit, Sir, you have a question? yes, sir. Sir, for direction and screenplay writing is a perfect site medical requirement like 20 by 20 vision. Sir, like if someone has a power, do they get disqualified for this direction and screenplay writing? Direction and screenplay writing में क्या है? Power का कुछ issue, some eyesight issue is saying. No, question. Abhijit, could you repeat, please? Sir, for Sir, just I for was direction writing. I was asking if there is no perfect vision like 20 by 20 vision for a direction and screenplay writing candidate. Is that a hindrance medically? For direction. Answer. That should not be any problem, but if you get selected in final merit list, you have to go through that medical test here on the campus. But we need to understand what kind of disability you have, so that No, sir, it's a usual like I can't see far off from like at the very end of the classroom. No, that shouldn't be any issue. Okay, sir. Thank you. Arijit, you do not have any experience in editing, but that is not something which may create any kind of a problem in orientation.
Yes, Sachin Sokaria. हाँ सर, नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ और बता सकते हैं सर? हाँ बताऊंगा। यस, आपने पूछा था ना पहले? हाँ सर, हाँ सर। ओके सर। स्वाधीन। सर जेट में सिलेक्शन हो जाने के बाद एक स्टूडेंट को SRFTI और FTI में चूज करना पड़ेगा क्या, कौन से में वो ओरिएंटेशन देने जाए, या दोनों में जा सकते हैं? दोनों में जा सकते हैं। अगर दोनों के क्वालिफाइंग उसमें आपका मतलब मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो आप दोनों जगह ओरिएंटेशन दे सकते हैं। इंटरव्यू दोनों जगह ओरिएंटेशन और इंटरव्यू आप कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। प्रणव। Sir, my question was currently I am an intern in government of Maharashtra as a media intern, and my work is video editing. So does experience matters? For what? For getting admission. For getting. No, Pranav, we are addressing here about writing and applying for the JET 2021. So to write JET 2021, there is no experience criteria here. Okay, sir. Yeah? Okay. Okay. Thank you. Yes. ये क्या है, फीस 4th सेमेस्टर की एक साथ सबमिट होगी या 2 सेमेस्टर करके होगी? पर सेमेस्टर। हाँ, पर सेमेस्टर होगी। हिंदी उर्दू भाषा BA में आवेदन कर सकता हूँ पटकथा। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, मगर यहाँ पे हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। कभी कभी हिंदी में भी बोला जा सकता है, पर प्राइमरी जो है वो इंग्लिश है। Deepak, you have a question? Yes. Yes, sir. Sir, I have just given my back 2 months ago and the result is still pending. So, what should I add on the site? नहीं, मैं समझा नहीं ठीक से। Swadhin, if you have asked your question, can you please lower your hand, Swadhin? सर और एक क्वेश्चन था। 1 मिनट रुक जाओ फिर। दीपक थोड़ा ठीक से पूछो, सुनाई नहीं दे रहा है। दीपक थोड़ा आराम से पूछो एक बार। Okay, sir. Yes, and it is still pending the result. हाँ। So what document should I put on the website? मतलब he is yet to clear 2 papers. हाँ, जो आपका जो लास्ट आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा ना, लेटेस्ट सर्टिफिकेट, वो आप अपलोड कर लीजिए। The one with the back, sir. Sorry? आपके पास जो लेटेस्ट रिजल्ट है, दीपक जी सुनिए, आपके पास जो लेटेस्ट रिजल्ट है वो आपको उसमें लगाना है, जो मार्क्स होंगे जो भी। और आप इस साल अगर ग्रेजुएशन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको एडमिशन के पहले उसका रिजल्ट पासिंग का रिजल्ट देना होगा। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी आपको एडमिशन मिलेगा। मगर जेट में अप्लाई मतलब जेट का एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए जेट का एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए यू मे बी अपीयरिंग ग्रेजुएट। Okay. I just want to give some information जिनका सवाल था regarding the medical test और disability के लिए। So for FTI website, sorry, FTI prospectus, you go through page number 57, 58, 59 and 60 and 61. Okay, it's mentioned there about medical tests, which disability can eligible for which courses. तो ये 6 पेज आप पढ़ लीजिए, उसमें पूरे लिखे हुए हैं from 57 to 61. Okay, so it's all mentioned. If you refer page number 60, it says that the candidates suffering from following disabilities are not eligible for the specialization as stated below. Okay, page number 60, mark it. उसमें लिखा है cinematography, blindness, low vision, deaf and blindness. Those people can't apply.
Okay, so it's written for all the courses. So you please go through the page numbers that Sir has said, specifically the page number 60 of the prospectus that is available on the JET portal. Please read it carefully so that you know, especially those who are asking about the medical specifications and requirements. So there is a specifically written type of disability. Please go through it once. Yeah. So before taking a couple of questions we may take before winding up. We are just taking you through the marking once again. Yes, so we are taking you again through that specifically. That is paper 1 part B, which is a respective specialization. Multiple select questions. So these questions would be subject specific questions that the specialization that you are applying for. And each question may have one or more than one correct answer or answers. So there would be 4 options. One or all 4 or 2 or 3 also may be right. So each wrong choice of yours will cut your marks. That is how it is. So there is a partial marking, 1 right, 0.5, 2 rights, 1, 1.52, like that. So this is how it is going to be calculated. If you don't attempt the question, that means you leave the question unanswered, then neither plus or nor minus will be given. So it's a 0 mark that is awarded to you. सर एक पूछना था। हाँ, अगर समझ लीजिए कि 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 सही है और बाकी 2 गलत है, और हमने 2 सही चुने और उसके साथ एक गलत ऑप्शन भी चुना है, तो मतलब आपने गलत जवाब दिया है, तो पूरी तरह -25 होंगे सर? हाँ। ओके सर। आपको प्लस मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपने सिर्फ राइट आंसर्स लिख के छोड़ा है, 2 गलत जवाब आपने लिखे नहीं है। ओके सर। सर हम डायरेक्टिंग और स्क्रीन प्ले राइटिंग में ड्रॉ कर सकते हैं क्या कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ बिल्कुल चाहे तो? बिल्कुल कर सकते हो। पेंसिल पेन कुछ भी चलेगा? हाँ, पेंसिल नहीं, यूज ही नहीं करना है पेंसिल। पेन। And don't use green and red color ball pen. Use only black and or blue. ठीक है, दोनों या सिर्फ एक? नहीं, आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, बट यूज ओनली दैट, आइदर ब्लैक और ब्लू. डोंट यूज रेड कलर पेन और मे बी सम ग्रीन पेन टू कलर और ड्रॉ एनीथिंग. ओके, थैंक यू। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है कि जब आप मोनोलॉग जो हमको खुद से प्रिपेयर करना होगा, वो सिर्फ हम लोग मोनोलॉग दे सकते हैं या हम एक पर्टिकुलर सीन कर सकते हैं जो हमने खुद ही लिखा है, या खुद ही, या मोनोलॉग ही देना है कंपल्सरी? आप अपने तरफ से कोई भी एक चीज, आप अपनी तरफ से कोई भी एक चीज प्रिपेयर करके आ सकते हो, और इसके डिटेल्स इंस्ट्रक्शन आपको ऑडिशन से पहले डिपार्टमेंट से आपको इन एडवांस दिए जाएंगे। हाँ, जो आप अगर क्लियर करते हो ऑडिशन, अगर पहले आपको दिए जाएगी, आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कितना समय का प्रिपेयर करना है, और एफटीआई की तरफ से आपको क्या डायलॉग दिए जाएंगे, वो आपको सब पहले ही ब्रीफ किया जाएगा। उसके बाद आपको पास इनफ समय दिया जाएगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए, उसके बाद ही ऑडिशन होगा। ओके सर, लेट्स टेक द लास्ट। हमारे पास जैसे कोई ऐड स्किल्स है, जैसे कि पेंटिंग
साथ में ला सकते हैं? एक्टिंग के लिए नहीं, सर जैसे कि मैं और चीज़ों की जैसे मुझे पेंटिंग अच्छी आती है, तो फैजल मैं फैजल अपनी अपना पेंटिंग साथ में। फैजल जरा अपना कैमरा ऑन करना। Yes. Yes, sir. It's not working. Sir, मैंने on चलो कर दिया anyway, sir. anyway, are you which course are you planning to apply? Sir, screen acting. तो you are asking about your paintings. No sir, मैंने कुछ लोगों से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि एक्स्ट्रा स्किल्स के लिए भी पूछा जाता है, तो उसके लिए आप पेंटिंग वगैरह भी लेके जा सकते हैं। तो मैं वही पूछ रहा था कि क्या वो मैं कंफर्म ये क्या लेके जा सकते हैं? हाँ लेके आ सकते हो ना, बिल्कुल। You can display your all talents. There's no issue. You can show your talent, na? Your skills you can show. That is not mandatory as though, but you can definitely show your talent and your skills. Okay sir. सर दिस ईयर मतलब फॉर्म फिल करते हुए जो पीपल आर हु आर बिलोंग्स टू आर्किटेक्चर, अप्लाइड आर्ट एंड फाइन आर्ट बैकग्राउंड, एक क्वेश्चन टिक मार्क है, तो वो मतलब किस लिए है कि वो फर्दर इवैल्यूएशन के लिए है या कुछ मतलब दैट पीपल हैव फ्रॉम फाइन आर्ट बैकग्राउंड, उनका कुछ मतलब थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा या मतलब समथिंग सॉर्ट ऑफ? For art direction and production design, there is a requirement, na? For you should be on that stream for that only. For some people there is a requirement. सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड मतलब ऐसा कुछ मतलब समथिंग रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ मतलब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कुछ ऐसा थोड़ी होगा? नहीं, हर एक कैंडिडेट लिए क्वेश्चन पेपर अलग कैसे होगा ना? दैट इज फॉर दोज कोर्स जो कोर्स के लिए जो बेसिक प्री रिक्विजिट है, जैसे एडीपीडी है आर्ट डायरेक्शन के लिए, हाँ, तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन एडिशनल मांगी होगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। Okay, sir. Server, your last question. जी सर। We are taking two. हेलो। Yes, Server, go ahead. जी सर, मैं इस साल IIMC का छात्र हूँ पत्रकारिता का, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल भर सकते हो, आप ग्रेजुएट हो ना? जी बिल्कुल भर सकते हो। ओके सर। Abhinay, your question is the last question. Venkat bhi, please lower your hand now. यस थैंक यू सर। सर मैं पूछना चाहता था कि फर्स्ट सेमेस्टर की जो हम फीस फिल करेंगे वो इंस्टॉलमेंट में फिल कर सकते हैं या फिर हमें एक बार में फिल करनी पड़ेगी? नहीं, सेमेस्टर की फीस आपको सेमेस्टर शुरू होने से पहले भरनी होगी। सर कुछ टाइम मिले, लाइक एडमिशन हो जाता है उसके बाद कुछ हमें टाइम दिया जाएगा उसको अरेंज करने के लिए या? हाँ बिल्कुल टाइम दिया जाएगा ना, ये एप्लीकेशन के लिए जब अगर रिजल्ट लगने के बाद जो कोर्स चालू होने के लिए आपको सबमिट करेंगे, टाइम तो दिया जाएगा आपको। जी सर। जैसे हर एक आपको सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा। उस टाइम के दौरान आपको बाकी सारी फॉर्मेलिटीज है, कोई सर्टिफिकेट है या कुछ भी बचा हुआ है, फीस जमा करनी है, वो सारी चीजें आपको उस टाइम में पूरी करनी है। जी ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Guys, my one request to you is whatever we have discussed today, even if we have answered or we have not answered a particular question or there is something that is left out, so in any case please write an email or raise and do an inquiry on the email given on the portal. We have given an email address. Please write a specific query that you have on that portal, on that email address, and please get an answer to that. Yeah. We have tried to answer some specific questions, also some generalized questions which are applicable to all. But even if there is anything that you have in your mind or you need further clarification, or if you still want to have some query, some question, please write an email on the address which is given on the JET portal. All right, so thank you very much, all the best to you,
फिर एक बार कहूंगा, सोच समझ के ग्रुप ए बी सी को देखकर ही फॉर्म भरना। सर मैं चाहता था यहाँ भरूं, गलती से वहां टिक कर दिया, तो बाद में उसका कुछ भी नहीं हो सकता। गंगा, you want to say something just to conclude the session? Thank you. Thank you, guys. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for the information. Just to conclude, so that Abha Thank you, can sir. have a good sleep. Filmmaking students will be given less preference for selection. No, there is no specific this thing for to give a less preference to anyone. Purely basis on the performance of JED. In case of acting, the audition, orientation, and interview, the best candidates are selected. There is no lesser preference given to any specific student. So all the best, everyone. Do your best, and those who will get through this entire process, you are welcome. Thank you very much. See you. Bye. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you.